हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रत्नत्राया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट जो 10 है उसका सेकेंड पार्ट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ऐसे भी अभी बहुत डिले चल रही हूँ मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मुझे थोड़ा काम पड़ जा रहा है, इसके वजह से मैं ला नहीं पा रही हूँ कंटिन्यू वीडियो। बट आई एम मेकिंग श्योर कि सारा टेस्ट जो भी विज़न आईएएस का है 30 सारा का सारा मैं करवा दूँगी, वो भी एग्ज़ाम से पहले। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ओके, सो पहला क्वेश्चन है आज का, विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the panchayat election. Okay, and there is asking about the correct statement. So first statement is the superintendent's and direction control of the preparation of electoral rolls and conducted of all election to the panchayat is vested in the state election commission. Is it true? Yes, it's a correct statement because जो भी पंचायत का इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ओके, ये गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। ओके, एंड सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑथराइज्ड टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द elections to the panchayat subject to constitutional provision. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is correct. And अगर हम इसमें कुछ important facts की अगर हम बात करते हैं, for example which is अगर हम पंचायत की बात करते हैं, ओके, सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पंचायत, सो पंचायत इनिशियली तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सो ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1992 में इसको ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 243 टू 243O तक। ओके, एंड इसमें इसको किस शेड्यूल में रखा गया था? इट्स इन द शेड्यूल 11th। एंड इसके अंदर अगर हम बोलेंगे कितने सब्जेक्ट्स हैं, सो देयर इज 29 टोटल सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट इन द पंचायत। ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements, and there is asking about the correctly match one. Okay, and there is a national park and a state, कौन सा correctly match है? Okay, so first one is Simli Pal National Park. Is it in the state of Odisha? Yes, it's a correct one. Simli Pal National Park located in the Odisha. So first statement is correct. Next one is Sikhaos Jwalao National Park located in Kerala. Is it true? No, it's not correct. It's actually located in Assam, not in Kerala. Okay, and why it is in news? Because it's a Bodo land territorial region. What is Bodo land territorial रीजन? ओके, सो इसको अभी क्या हुआ है? सो इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है रिसेंटली, कब? मई 2025 में। ओके, सो इन मई 2025 इट इज़ डिक्लेयर एज द नेशनल पार्क। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच। नेक्स्ट वन इज इराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड इन द असम. इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट्स लोकेटेड इन द केरला. ओके, एंड इट इज़ फेमस फॉर नीलगिरी तहार. नीलगिरी तहार के लिए फेमस है, एंड ऑल्सो फेमस फॉर द नीलकुरंजी फ्लावर. ओके, नीलकुरंजी फ्लावर जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये ओनली वंस इन अ 12 ईयर इट्स फ्लावरिंग. ओके, ये 12 साल में एक बार खिलता है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. Only one statement is correctly matched, which is statement 1. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements, and there is asking about the which of the above are type of
म्यूनसिपैलिटीज मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, कौन सा टाइप है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशनड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अबाउट द म्यूनसिपैलिटीज। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यस इट इज मेंशनड। नगर पंचायत भी मेंशन है, म्यूनसिपल काउंसिल भी मेंशन है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल टाउनशिप, नो इट्स नॉट मेंशन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, only statement 1, 2 and 3 is correct one. Okay, and if we're talking about the types, so there is three types total, three types of the municipalities mentioned in the every state. Okay, so answer is option number A. Next question is consider the following pairs, and there is asking about the correctly match. Okay, so how many of the pairs are correctly matched? So first statement is there is a urban local bodies and created through under, किसके अंदर create किया गया? Okay, so first one is municipal corporation created under the act of the state government. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is notified area created through notification of a government gazette. Yes, it's also correct. Next one, cantonment board created under the act of central government. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. All three statements are correct. Okay, next question is consider the following statements regarding the consultative committee. Okay, regarding the consultative committee, which statement is correct, वो पूछा गया. Okay, so first statement is they are a form for informal discussion between the minister and member of parliament on policies and programs of the government. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is they are constituted by the speaker of the Lok Sabha. Is it true? No, it's not correct, because it is constituted by the Ministry of Parliamentary Affair, not by the Lok Sabha, Speaker of the Lok Sabha. So second statement is incorrect. So answer for this question is option number A. Only statement 1 is correct. Okay. Next question is which of the Indian Parliament consider the matters of procedure and conduct of business in the House and recommends necessary amendments or addition to the rules of the House? So is it a Business Advisory Council? No. General Purpose Committee? No. House Committee? No. It's a rules committee. Okay, so option number D is the correct one. And if we're talking about the another committees like बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, अगर हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में बात करें, सो इट्स टॉक्स अबाउट द रेगुलेट द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउसेस. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जनरल पर्पस कमिटीज, इट्स this committee considered advice on matters concerning affairs of the houses. Okay, and do not fall within the jurisdiction of the parliamentary committee. नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं हाउस कमेटी की, इट्स टॉक अबाउट दी डील्स विद द रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ऑफ मेंबर्स एंड अदर amenities. Okay, like food, medical aid, etc. So answer is option number D. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the organs of municipal corporation, and there is asking about the correct statement. Okay, there is asking about the correct statement related to organ of the municipal corporation. So first statement is the council of municipal corporation is headed by the mayor, who is its executive head. Is it true? No, it's not correct, because if we're talking about the council of the head of the mayor, council is headed by the mayor. It's a correct statement from here, but he is assisted by a deputy mayor. He is elected in a majority of the state for 1 year renewable term. Okay, so first statement is incorrect. Next one is the standing committee are created to facilitate the working of the council, which is
too large in size. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the municipal commission is appointed by the state government and is a member of IS. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, which is only statement 2 and 3 is correct and the statement first is incorrect. Okay. Next question is consider the following committees of the parliament, and there is asking about the existed only in the Lok Sabha. Okay. कौन सा कमिटी जो है वो ओनली एग्जिस्ट करता है इन दी लोकसभा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट विच इज कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रिजोल्यूशन. इज इट ट्रू? यस, इट्स ओनली इन द लोकसभा exist. It's only exist in the Lok Sabha. So first statement is correct. Next one is the committee on government assurance. It's in the both. Okay, Lok Sabha as well as Rajya Sabha. In the Lok Sabha, its member is Lok Sabha. Its member is 15, and if we're talking about the Rajya Sabha, member is 10. Okay. So first statement, second statement is incorrect. Next one is both on absence of members from the sitting of the houses. Yes, it's a correct one. So answer for this question is answer for this question is option number C. Only 1 and 3 is the correct one. Okay. Let's come to the next question, which is which of the following operations was recently conducted by the Indian Army? Okay, Indian Army to the provide medical assistance to earthquake victims in Myanmar. Okay, so first statement is Operation Maitri. No, it's not related to the assistance, medical assistance provided to the Myanmar. It's related to the earthquake relief in the Nepal in 2015. Okay, so first statement is incorrect. Next one is Operation Brahma. Yes, Operation Brahma is related to the Indian conducted by the Indian Army to provide medical assistance to the earthquake in Myanmar in March 2015. So second statement is correct for this question, but let me tell you about other operations like Operation Dost, which is related to the टर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक हुआ था उन 2023 उसमें रिलीफ प्रोवाइड करवाया था इंडिया. सो and another one is Corona operation, which is India's medical and relief assistance to cyclone hit in Myanmar in May 2023. Okay, so answer for this question is option number B is correct. Okay, which is Operation Brahma. Next one is consider the following statements regarding the committee on public undertaking. Okay, and there is asking about the correct statement. So first statement is related to the committee on public undertaking. It was created on the recommendation of Santhanam Committee in 1964. Is it true? No, it's not correct because it's not created by the Santhanam Committee. It's created by the Krishna Menon Committee. Okay, Krishna Menon Committee के द्वारा ये recommend किया गया था. So first statement is incorrect. Next one is though members are drawn from the both of the houses of parliament, its chairman can be Lok Sabha only. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is it examines the report of the controller and auditor general of a public undertaking. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. Only not option number B. Option number C. Statement 2 and 3 is correct and statement first is incorrect. Okay, so answer is option number C. Next question is consider the following statements regarding the membership of the urban local government. Membership of the urban local government. So there is asking about the correct one. So first statement is all the members of the municipality are directly elected by the people of municipal area. Is it true? No, it's not correct because if you are talking about the urban local bodies and
इसमें क्या होता है कि अंडर आर्टिकल 243 आर क्लॉज 1 ऑल सीट्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉट इन द म्यूनसिपल एरिया. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज a member of the Rajya Sabha elected from a particular state can be a member of any municipality within the state. Is it true? No, it's also incorrect, because the member of the Rajya Sabha and the state legislative council registered as electors within the municipal area. Okay, उसी municipal area में electoral roll में उसका नहीं होना चाहिए. Okay, so second statement is also incorrect. So answer for this question is option number D. Both statement 1 and 2 is incorrect, which is neither 1 nor 2 is the correct one. Okay, so next question is with reference to local self governance in India. So for which of the following is happened earlier? Okay, इसमें पूछा क्या गया कि कौन सा जो भी इसमें हुआ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड रिफॉर्म्स, उसमें कौन सा सबसे पहले किया गया. ओके, सो फर्स्ट वन इज लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन डन इन द 1882. एंड अगर हम लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड सो ये 1882 में लाया गया. सो नेक्स्ट वन इज द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन कम्स इन द 1907. ओके, 1907. नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन 1688. Another one is passing of the Cantonment Act. It is in the 1924. Okay, 1924. So answer क्या हो जाएगा? Option number C is the correct one, because there is asking about the earliest one, and earliest one is establishment of the first municipal corporation in India. Okay, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the district planning committee. Regarding district planning committee, which statement is correct? So first statement is it consolidates the plans prepared by the panchayat and municipality in district. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the finalized draft development plan is sent to the governor who in turn submit into the state legislature. No, it's not correct, because if we're talking about the finalized draft developed or related to the district planning committee, the chairman of the every district planning committee shall forward the development plan as a recommended by such committee to the government of state. Okay, not by the governor. Okay, so second statement is incorrect. So answer for this question is option number A. Only one statement is correct, which is statement 1. Okay, next question is consider the following statements, and there is asking about the provisions of part 9 of the constitution can be extended how many of the above mentioned areas. Okay, किस किस एरिया में पंचायती राज जो है मेंशन है 9 पार्ट 9 में, वो किस किस में अवेलेबल होगा. ओके, सो फर्स्ट वन इज फिफ्थ शेड्यूल. नो, यस, फिफ्थ शेड्यूल में ये एप्लीकेबल होगा. और फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं वो इंडिया के टोटल 10 स्टेट्स में एप्लीकेबल है. ओके, 10 स्टेट्स में. ओके, next one is sixth schedule. No, it's not. Special category status. No, it's also not. Okay, so if we're talking about the sixth schedule में 4 स्टेट आते हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो आप ऐसे इसको याद रखते हैं ATM स्क्वायर, जिसमें कि मनी नहीं है. ओके, सो लेट मी टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ दिस. ATM means Assam, T it means Tripura, and M which means मेघालय एंड मिज़ोरम. ओके, सो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं निमोनिक के थ्रू, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर में भूलो ना. ओके, सो इसमें ओनली क्या हो जाएगा, ओनली फिफ्थ शेड्यूल. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर
A, only one statement is correct, which is statement 1. Okay. So next question is, consider the following states finance commission in the context of state finance commission, and that is asking about the correct statements. So consider the following statement is correct. So first statement is, the governor of a state shall after every 5 years constitute a finance commission to review the financial position of both the panchayat and the urban local bodies. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is, the Constitution of India has provided the composition of the commission, the required qualification of its member, and manner of their selection. Selection. Is it true? No, it's not correct, because its Constitution of India does not provide the composition of a commission, but it is may be provided by the state legislature, may be provided the composition commission. Okay, so second statement is incorrect. Next one is, so answer for this question is option number A, only one statement is correct. Okay, next question is, consider the following statements, and there is asking about the correct one related to the Gram Sabha. Okay, so first statement is, the term Gram Sabha has been defined in the Constitution. No, the term Gram Sabha is not defined, but it's talk about the power and function of the Gram Sabha in the Constitution. Okay, so first statement is incorrect. Next one is, it consists all the adults population of the panchayat. Is it true? No, it's also incorrect. So because इसमें it's talk about the Gram Sabha as a body consisting of person registered in electoral roll of the village within the panchayat area is applicable to the. So second statement is also incorrect. So answer for this question is option number D. Both neither 1 nor 2 is the correct one. Next question is, consider the following statements related to the Panchayati Raj, and there is asking about the correct statement. So first statement is Balwant Rai Mehta Committee. Okay, first statement is Balwant Rai Mehta Committee recommended the constitutional status to the Panchayati Raj institution. Is it true? No, it's not correct, because Balwant Rai Mehta Committee 3-tier system को applicable किया था, not recommend किया था, not constitutional status. And if you are talking about the who is recommended the constitutional status, तो वो हो जाएगा LM Singhvi कमेटी इसको रिकमेंड किया था. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज, द फर्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज इट्स नॉट द टर्म ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री, डन बाय द जवाहरलाल नेहरू. ओके, और ये कब किया गया था? सो इट्स इन द 2 अक्टूबर 1959. और कहाँ पे फर्स्टली इम्प्लीमेंट किया गया था? सो नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज, द GVK Rao committee had highlighted the bureaucratization of the development and alienation of the Panchayati Raj institution from it. Is it true? Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number A. Only one statement is correct, which is statement 3rd. ओके, एंड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम जानना चाहेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, एज वी नो कि वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया था. कब? 1992 में.
ओके एंड ये कौन से आर्टिकल में है? सो आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक रखा गया है। ओके और ये कौन से पार्ट में है? सो पार्ट 9 में है। एंड अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो वो कौन से शेड्यूल में रखा गया है? शेड्यूल 11th में। ओके 11th में। एंड शेड्यूल 11 में कितना टोटल इसमें सब्जेक्ट्स है? सो 29 सब्जेक्ट है। ओके सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements and there is asking about the correct statement. So first statement is the constitution provides for the reservation of not more than one third of the total number of the seats for women. Is it true? No, it's not correct because ये 1/3 से ज़्यादा हो सकता है. Okay, so first statement is incorrect. Next one is not less than 1/3 of the total number of the offices chairperson in this panchayat at each level shall be reserved for women. Yes, it's a correct one. Next one is currently 21 state and 2 Union territories have made provisions in their respective state Panchayati Raj acts and rule 50% of the reservation for the women in Panchayat. Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number B. 2 and 3 statement 2 and 3 is correct and statement 1 is incorrect. Okay, next question is consider the following statements and there is asking about the how many of the above are compulsory provision under Article 73rd Constitution Amendment 1992 which talks about the Panchayati Raj institution. Okay, so first statement is direct election to the post of chairperson of Panchayat at all level. Is it true? Yes, it's a compulsory provision. Next one is giving representation to the chairperson of the village panchayat in the intermediate panchayat. Is it a compulsory? No, it's a voluntary provision. Okay, voluntarily provision. So second statement is incorrect because there is asking about the compulsory provision only. Okay, so next one is granting financial power to the panchayat. No, it's not correct because it's also a voluntary provision. And if you are talking about fixing terms tenure of 5 years for the panchayat at all level, yes, it's a correct one. So answer for this question is option number B. Only 2 statement is correct. Only 2 statement is compulsory provision related to the under Article 73 Constitution Amendment Act 1992. Okay, next one is consider the following and how many of the above are 3-tier Panchayati Raj institution. Okay, so इसमें से कौन सा 3-tier Panchayati Raj institution है and tell me in the comment who is the recommended the 3-tier system of the Panchayati Raj institution. Okay, अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन के साथ आपको बताया भी. ओके सो इसमें देखते हैं कि कौन सा है 3-tier. सो महाराष्ट्र, यस, महाराष्ट्र हैव अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम. गोवा नो, अरुणाचल प्रदेश नो, सिक्किम ऑल्सो नो. ये तीनों में 2-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंटेड है. ओके एंड नेक्स्ट वन इज केरला, इसमें भी 3-tier है. ओके सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट वन. ओके एंड अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इसमें 2-tier हो या 3-tier हो, ये कैसे डिसाइड करते हैं स्टेट, किस बेसिस पे. ओके इतना बता देती हूँ मैं कि पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. सो वो पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, तो 2-tier होगा, उससे ज़्यादा होगा तो 3-tier सिस्टम. वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements about the appointment of the Prime Minister of India. Okay, appointment related to the appointment of Prime Minister of India. and यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज a person must prove majority in the Lok Sabha before being appointed as a Prime Minister. Is it true? No, it's not correct because President may first appoint him as a Prime Minister and then ask him to prove his majority in the Lok Sabha within a reasonable time. Okay,
So first statement is incorrect. Next one is a person who is not a member of either house of the parliament can be appointed प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ. यस, इट्स अ करेक्ट वन. और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है सर? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग बॉडीज एंड देयर इज रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व एज द चेयरमैन ऑफ हाउ मेनी ऑफ द बॉडीज. ओके. इसमें से कौन से बॉडीज का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं? सो फर्स्ट वन इज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल. यस, इट इज चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. यस, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. ओके. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट वन इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. It is chaired by the prime minister? No, it's not, because it is chaired by the defense minister. Okay, defense minister. So second statement is incorrect. Next one is national board for wildlife. Is it chaired by the prime minister? Yes, it's a correct one. Next one is national disaster management authority. Is it yes, its chairman is prime minister. Okay, so answer for this question is and it is a statutory body. Okay, ये लॉ पास करके बनाया गया है, that's why it is called statutory body. Okay, and so answer for this question is option number C. Only 3 statement is correct, जिसमें कि इनमें से statement प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ कौन कौन से बॉडी के चेयरमैन थे? सो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के. ओके, और ये कब लाया गया था? 2005 में. ओके. एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? सो डिफेंस मिनिस्टर. ओके. एंड अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है करंट में, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and there is asking about the correct statement. So first statement is Solicitor General of India does not have the right to cast a vote in the parliamentary proceeding. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is Solicitor General of India works independently of the Attorney General of India. Is it true? No, it's not correct, because Solicitor General of India does not work independently of the Attorney General of India. It's a subordinate to the Attorney General and assist them. Okay, so does not. So for second statement is incorrect. So answer for this question is option number A. Only statement 1 is correct. Okay. Next question is consider the following statements about the Vice President of India. Okay, Vice President of India के regarding कौन सा statement correct है वो पूछा है. Okay, so first statement is the Vice President can continue in office beyond 5 years until the successor assume charges. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the Vice President can act as a President for the maximum of 6 months within which a new President must be elected. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is the only person to have been elected as the Vice President of India for 2 consecutive years. Is it true? 2 consecutive terms. Is it true? No, it's not correct, because and 2 consecutive terms मतलब क्या होता है कि लगातार 2 बार. ओके, मान लीजिए 5 साल के लिए भी बने, फिर से वही बन गए 5 साल के लिए. ओके, सो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है. ओके, सो इसमें क्या यही है सिर्फ? नो, ओनली पर्सन नहीं है, 2 पर्सन अभी तक वैसे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं. और वो कौन कौन से? एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है एंड अनदर वन इज हामिद अंसारी. ओके, हामिद अंसारी. और इनका टर्म क्या था? सो 2007 टू 2017. ओके, ये 10 ईयर, 2 कंसेक्यूटिव ईयर. एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका टेन्योर कब था? सो 1952 टू 62, 10 ईयर्स. ओके,
So answer for this question is option number B. Only statement 1 and 2 is the correct one, and statement third is incorrect. Okay. Next question is consider the following statements about the election of Vice President of India. So रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वही पूछा गया. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट द वाइस प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट assembled at a joint sitting. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the anti-defection law is not applicable to the vice presidential election. Is it true? Yes, it's also correct. And anti-defection law कौन से 10th शेड्यूल में है. ओके, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लाया गया था वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, और जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर प्लीज़ दीजिए. ओके, क्योंकि इससे आप ही का रिविज़न होगा एंड जब आप लिखते हो तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ वैसी होती है जो रिकॉल हो जाती है बाद में. ओके, सो इसीलिए आंसर देना जरूरी होता है. ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज इन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू. यस, इट्स अ करेक्ट वन. So answer for this question is option number C. All three statements is correct. Okay. Next question is consider the following pairs and there is asking about the correctly matched one. Okay. So first one is and यहाँ पे पूछा क्या है pardoning power. Okay. And nature उसका कैसा है. So if you're talking about the pardoning power, it comes under the 72 of the article and 161 of the article. Okay. और दोनों में difference क्या है. So if you're talking about the under article 71, it's pardoning power to the president and 161 में किसके पास है. So गवर्नर के पास. Okay. So first statement तो देखते हैं कि कौन सा statement क्या बोल रहा है. So first is commutation. Commutation changes the nature of the punishment to a lesser form. Yes, it's a correct one. Commutation में क्या होता है कि जो punishment मिला हुआ है, ठीक है, उसका नेचर ये डाउनग्रेड कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी चली गई है किसी भी क्राइम में अंदर, तो उसको पनिशमेंट मिला है रिग्रेस वाला. ओके, तो उसको प्रेगनेंसी की वजह से उसको थोड़ा लेसर रिग्रेस कर देगा या फिर जो उसका पनिशमेंट रहेगा उसको थोड़ा लोअर कर देगा ताकि उसके लिए ईजी पड़े. लाइक प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या फिर ओल्ड लोग जो रहते हैं, ओके, बुजुर्ग लोग, उनके लिए. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच. नेक्स्ट वन इज रिमिशन. रिमिशन में क्या होता है कि रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन बट नेचर उसका चेंज नहीं करता है. जैसा तुमको सजा मिला है वैसा ही रहेगा बट उसका ड्यूरेशन कम कर देगा. ओके, दिस इज कॉल्ड रिमिशन. एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पाइट implies temporary postponed of the execution. No, it's not correctly match because ये किसके बारे में बात करता है. सो इट्स टॉक अबाउट द रिप्राइव. ओके, रिप्राइव नॉट रिस्पाइट. एंड अगर हम रिस्पाइट की बात करते हैं इसमें क्या होता है लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल. इसमें क्या होता है कि टाइम जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया जाता है. ओके, रिस्पाइट में. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. only two statement is correctly matched, which is statement 1 and 2. Okay, and third one is incorrect. Okay, next one is which of the following bills require prior permission of the president before being induced in the legislation. and यहाँ पे correct statement पूछा है. so first statement is a union bill involving expenditure from the consolidated fund of India. yes, it's a correct one. and आप हमें comment में ये बताइए consolidated fund of India किस article में आता है. okay, so first statement is correct. next one is a state bill restricting trade, commerce and intercourse within the state. yes, it's also correct. next one is a union bill for alteration of state boundaries or creation of new state. it's also correct. so answer for this question is option number D. all three statements are correct. okay, next question is consider the following statements about the presidential election in India. okay, presidential election in India related to the कौन सा statement correct है वो पूछा गया. okay,
So first statement is dispute related to the president's election are decided by the Supreme Court in its decision is final. Yes, it's a correct one. Supreme Court decide करेगा presidential election में अगर कोई भी कुछ भी हुआ तो एंड उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज इफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड एक्शंस टेकन बिफोर द वर्डिक्ट बाय प्रेसिडेंट रिमेन वैलिड. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C is the correct one. Both statement 1 and 2 is the correct. Okay. Next question is the office of principal scientific advisor was placed administratively under the prime PMO office. No. Home Affairs, no. Ministry of Science and Technology, no. It comes under the Cabinet Secretary. Okay, so option number D is the correct one. Next question is which of the following statement is not correct? Okay, यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से which one is not correct पूछा है. So first statement is he she और ये किसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है. सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही सी इज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन, ही डज नॉट enjoy the privileges and immunities that are available to the member of parliament. Is it true? No, it's not correct because इम्यूनिटी इसे भी मिला हुआ है. ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस मिला है जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिला है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज अटॉर्नी जनरल इज नॉट फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. येस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस. इट्स ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? Answer for this question is option number B because there is asking about the incorrect statement. Okay, और incorrect कौन सा है? Statement B. So answer is option number B. Let's come to the next question, which is which of the following amendment to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for the reconsideration by the Union Council Minister. So it's 39, no. 40 भी नहीं, 42 भी नहीं, it's a 42. So answer for this question is 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ओके, एंड इसमें 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. ओके, क्योंकि इसमें उस टाइम इतना ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ था कि बताया नहीं जा सकता उसके वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements and there is asking about the correct statement. So first statement is the cabinet secretariat functions directly under the prime minister. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the administrative head of the secretariat is the cabinet secretary who is also the ex officio chairman of the civil service board. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is the correct one. Okay. Next question is consider the following statements and there is asking about the correct one. So first statement is when Lok Sabha passes a motion of no confidence against the Council of Ministers, all members of the council must resign including those from the Rajya Sabha. Is it true? Yes. जब नो कॉन्फिडेंस मोशन साइन किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो सारे को रिजाइन देना पड़ता है. ओके, कलेक्टिवली. सो क्योंकि कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर not exceed 15% strength not of the parliament of the लोक सभा. और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाया गया? सो इट्स फ्रॉम द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2003 में लाया गया था. ओके,
सो किससे? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ओके। और ये लोकसभा में होता है, ना कि पार्लियामेंट में। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पद्मा अवार्ड कमिटी, ओके। एंड पद्मा अवार्ड कमिटी के रिगार्डिंग द पद्मा अवार्ड कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड चेयर्ड बाय, ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एंड चेयर किसके द्वारा किया जाता है वो पूछा गया, ओके। सो फर्स्ट वन इज बाय द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, नो। बोथ बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, नो। कॉन्स्टिट्यूट और चेयर किसके द्वारा किया जाता है? सो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट सेक्रेटरी रिस्पेक्टिवली। इज इट ट्रू? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ओके। एंड अगर हम पद्मा अवार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर जानेंगे तो ये स्टार्ट कब गया था पद्मा अवार्ड देने के लिए? तो 1954 में स्टार्ट किया गया था, ओके। एंड इसमें क्या है कि इसको दिया कब जाता है? वेट अ सेकेंड। फर्स्टली इसको स्टार्ट किया कब गया था? 1954 में, ओके। एंड इसको दिया कब जाता है? सो एवरी ईयर ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, ओके। सो इस बार भी 2026 में दिया गया है कितना कोई को? टोटल 131 पर्सन्स को दिया गया है पद्मा अवार्ड, ओके। जिसमें कि 3 कैटेगरी होता है, ओके। पद्मा अवार्ड का 3 कैटेगरी होता है, एक पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण एंड तीसरा होता है पद्म श्री, ओके। सबसे लोवेस्ट होता है पद्मश्री, देन पद्म भूषण, देन पद्म विभूषण इज द हाईएस्ट वन, ओके। जिसमें कि पद्म विभूषण में कितना कोई को मिला है? सो टोटल 5 पर्सन्स को मिला है पद्म विभूषण। एंड पद्म भूषण की अगर हम बात करें, ये कितने कोई को मिला है? सो 13 पर्सन्स को मिला है। एंड पद्मश्री की अगर हम बात करते हैं 113 लोगों को मिला है, ओके। सो अगर हम बात करते हैं इसमें से पद्म विभूषण वाले के, ओके, पद्म विभूषण वाले पर्सन्स की बात करते हैं तो किसको मिला है? सो धर्मेंद्र जी को मिला है, जो कि मरणोपरांत मिला है, ओके। और ये किस फील्ड में? तो आर्ट फील्ड में मिला है। एंड कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? सो महाराष्ट्र से, ओके। एवरीवन नोज बिकॉज ही इज़ अ वेरी फेमस एक्टर। एंड नेक्स्ट वन इज दूसरा किसको मिला है? सो केटी थॉमस को, ओके। केटी थॉमस जी को मिला है, वो पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में इनको मिला है। किसके फील्ड में? सो पब्लिक अफेयर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सो ही इज़ फ्रॉम केरला, ओके। अनदर वन इज एन राजम, ओके। एन राजम को मिला है, जो कि इनको भी आर्ट के फील्ड में मिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सो यूपी से। अनदर फोर्थ वन इज पी नारायणन, ओके, एंड ही इज़ फ्रॉम केरला। एंड इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में मिला है। एंड फिफ्थ वन इज वी.एस. अच्युतानंद, ओके। और इनको भी पब्लिक अफेयर के फील्ड में मिला है, और ही इज़ फ्रॉम केरला, और इनको भी पोस्टह्यूमसली मिला है, मतलब मरणों उपरांत। तो मरणों उपरांत 2 को मिला है, एक धर्मेंद्र जी को एंड इनको भी, ओके। सो answer is option number C. Let's come to the next question, which is consider the following statements about the deputy prime minister, okay. डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा गया, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज the post of deputy prime minister is not mentioned in the constitution. Is it true? Yes, it's a correct statement. deputy prime minister के बारे में constitution में कहीं mention नहीं है. Next one is the Morarji Desai was the first deputy prime minister of India. Is it true? No. फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमारे मोरारजी देसाई जी नहीं थे. कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, न कि मोरारजी देसाई जी. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओनली स्टेटमेंट 1 is correct. Okay, next question is which of the following functionaries is also known as chief whip of the government. Okay,
इसमें से कौन सा फंक्शनरी है जो चीफ ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है? सो प्राइम मिनिस्टर, नो। लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन मेजोरिटी, नो। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, यस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. Okay, next question is consider the following statements, and there is a two statement. So first statement is the governor has discretion to the recommendation the imposition of president rule. Is it true? Yes, it's a correct one. नेक्स्ट वन, और आपको कमेंट में ये बताना है कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में आता है. ओके, so first statement is correct. Next one is as per the Constitution of India, in certain cases the governor of the state may act independently from the consultation of the state council minister. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number A. Both statement 1 and 2 is correct and statement second is correct explanation of the statement first. और जब ऐसे statement वाला क्वेश्चन आए ना, तो जब भी आपको लगे कि पता नहीं है कि नहीं है, तो आप बीच में because का यूज़ कर सकते हैं. ओके, because लगा के आप पढ़िएगा ना, तो आपको डेफिनेटली आप पकड़ लीजिएगा कि ये सच में इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल इसी में हम देखते हैं, द गवर्नर हैज़ डिस्क्रिशन टू द रिकमेंडेशन ऑफ recommend the imposition of precedent rules because as per the Constitution of India, in certain cases the governor of a state may act independently from the consultation of the state council of minister. ओके, सो ऐसे में आपको पता चल जाएगा. सो आंसर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, so first department is, and इसमें पूछा क्या, how many of the above department of government of India come under the ministry of. So question is consider the following departments of the government of India, and there is asking about the how many of the above department of government of India come under the ministry of comes under the Ministry of Commerce and Industry. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कौन कौन से आते हैं? ओके, ये पूछा गया. सो फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इज इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री? इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज इट्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, so first statement is incorrect. Next one is department of heavy industry. Is it true? No, it's also not comes under the ministry of commerce industry. It comes under the ministry of heavy industry. Okay, so second statement is also incorrect. Next one is department of economic under, it's also comes under the ministry of finance, not in the ministry of commerce industry. And department of promotion and promotion of industry and internal trade, yes, it comes under the ministry of commerce and industry. Okay, so answer for this question is option number A. Only one statement is correct, which is statement 4. एंड अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, ये क्या हैंडल करता है? इट्स हैंडल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ओके, इंटरनल ट्रेड within our country, within India. Okay, so statement 1 is so answer for this question is option number A. Okay, let's come to the next question. Consider the following statements, and there is asking about the correct statement. So first statement is the Constitution of India does not prescribe a time limit for the governor to assent to the bill passed by the state legislative assembly. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is under article 368 of the Indian Constitution, Constitutional Amendment Bill cannot be introduced in the state legislature. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. Both statement 1 and 2 is the correct one. Okay.
Next question is consider the following statement in the context of Directorate General of Hydrocarbon. Okay, Directorate General of Hydrocarbon के regarding कौन सा statement सही है वो पूछा. Okay, which one is correct? So first is the Directorate General of Hydrocarbon is functioning under the administrative control of Ministry of Coal. Is it true? No, it's not correct because it's not comes under the Ministry of Coal. It comes under the Ministry of Petroleum and natural gas. Okay, so first statement is incorrect. Next one is it is the nodal agency for implementation of coal-based methane policy. Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number B. Only statement 2 is correct. Okay, next question is the chief minister of the CM, which is the chief minister of the state, gives advice to the governor on which of the following matters. Okay, CM कौन से मैटर में गवर्नर को एडवाइस देंगे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू प्रोरोग्यू और समन द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. यस, इसमें एडवाइस देंगे. नेक्स्ट वन इज ऑन द डिसीजन ऑफ डिसमिसल ऑफ द स्टेट मिनिस्टर. इसमें भी एडवाइस देंगे. नेक्स्ट वन इज ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द 10th शेड्यूल. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज इसमें नहीं देंगे एडवाइस क्योंकि स्पीकर ऑफ द हाउसेस इसमें ये काम करेंगे. ओके, और chairman. So third statement is incorrect. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is correct only and statement third is incorrect. Okay, so answer is option number C. Next question is consider the following statements and there is asking about the how many provisions are added through the constitutional amendment. इसमें से कौन सा जो provision है वो constitutional amendment से add किया गया. Okay, so first one is the same person is appointed as a governor of 2 or more state. Yes, it's a correct one. क्योंकि ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में. ओके, सो ये सही है क्योंकि यहाँ यही पूछा गया है कि कौन सा जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया है. ओके, और अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है? 368 में. ओके, सो कौन सा? तो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, ये सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. नेक्स्ट वन इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट बिकॉज ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया है. 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया है. अनदर वन इज गवर्नर टू एड्रेस द स्टेट legislature at the commencement of the first session after each general election. No, it's not correct because ये originally constitution में था under article 176 clause 1 of the Indian constitution. Okay, so ये दोनों induced किया गया था constitution amendment से. So answer for this question is option number B. Only 2 statement is correct, which is statement 1 and 2, and third statement is incorrect. Okay, so answer is option number B. Next question is with respect to the governor of the state, consider the following statements. और यहाँ पे क्या पूछा है? So correct statement पूछा है related to the governor. Okay, so first statement is he/she can be removed by president at any time. Yes, it's a correct one. Next one is he/she cannot in office beyond the expiration of the period of 5 years. No, it's not correct because जो period है 5 year का इन लोगों का tenure है उसके अलावा भी वो ऑफिस में कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक उनका सक्सेसर या फिर जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट नहीं किए जा सकते, तब तक ये रह सकते हैं जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता. ओके, ऑफिस वो जब तक संभालेंगे नहीं. सो द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड ऑन द गवर्नर विच रिमूव द प्रेसिडेंट. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट वन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number D. Only 1 and 3 statement is correct and statement second is incorrect. Okay, next question is consider the following statements and there is asking about the related to the Advocate General of
Advocate General for a state is removed by the same manner as the judge of High Court. Is it true? No, it's not correct because ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये इसको कौन रिमूव कर सकता है? गवर्नर, ओके, जब चाहे तब, ना कि जज को जैसे रिमूव किया जाता है वैसे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of high court to be advocate general of a state. Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number D. Only statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Okay, next question is consider the following statement, and there is asking about the correct statement. So first statement is each house of the legislature of a state shall have a separate secretarial staff. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the recruitment and condition of the service of a person appointed to the secretarial staff of the legislative assembly is regulated by the speaker. Is it true? No, it's not correct because it's not regulated by the speaker of the legislative assembly. It's appointed to the secretarial staff of the house or house of the legislature of the state, okay, not by the legislative assembly. So answer for this question is option number A. Only one statement is correct, which is statement 1. Okay, next question is which of the following cases is become constitutional obligatory for the governor to reserve the bill for the consideration of the president. Okay, इसमें से कौन सा में रिकन्सिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व किया जाएगा? ओके, सो फर्स्ट वन इज व्हेन बिल वायलेट द इक्वल pay for equal work. Is it true? No, it's not correct. Next one is bill against the provision of the fundamental right. No, तब भी नहीं. और ये आप बताइए फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है और आर्टिकल कितने से कितने तक है? ओके, एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी किस आर्टिकल में मेंशन है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. नेक्स्ट वन इज व्हेन अ बिल डील्स विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द आर्टिकल 331A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नो. When a bill endangers the position of the state high court. Yes, option number D is the correct one related to the constitutionally. It becomes constitutionally obligation for the governor to reserve the bill for the consideration of president when a bill endanger the position of the state high court. Okay, so option number D is the correct one. Next one is consider the following statements, and there is asking about the correct one. So first statement is the Article 77 of the Indian Constitution of India deals with the allocation of business of the Government of India. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the ministries and department are created by the Prime Minister of India. Is it true? No, it's not correct because the ministry and department are created by the President on the advice of the PM. Okay, advice of the PM. ये ministries and department create किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, नॉट डायरेक्टली बाय द पीएम. ओके, बट रिकमेंडेड पीएम ही करेंगे. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, next question is consider the following function, and there is asking about the how many of the above function are performed by the Department of Consumer Affair. Okay, Department of Consumer Affair के द्वारा इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है? सो फर्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016. यस, इट्स अ करेक्ट वन. इट्स परफॉर्म फंक्शन अंडर द Department of Consumer Affair. Next one is regulation and packaged commodities. Correct one. Implementation of standard of weight and measures. The Legal Metrology Act 2009. Yes, it's also correct. Monitoring the price and availability of the essential commodity. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number D. All four statement is correct. Okay. Next question is consider the following with regard to governor of state. Okay,
गवर्नर ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो पूछा गया है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज court are empowered to inquire into the advice tendered by the ministers or to governor. Is it true? No, it's not correct because courts are not empowered to inquire into the advice tendered by the minister to the governor. So first statement is incorrect. Next one is neither criminal nor civil proceeding can be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. Is it true? No, it's not correct because criminal का जो charges होता है at the क्रिमिनल चार्जेस जो होता है वो जब वो ड्यूरेशन उनका टर्म रहेगा उस टाइम नहीं इंक्वायर किया जा सकता है, बट अगर सिविल प्रोसीडिंग के रहे तो ये किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है? 2 मंथ का उसको नोटिस देना पड़ेगा पहले, देन इंक्वायरी स्टार्ट होगा। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज यहाँ पे पूछा था करेक्ट वन। ओके, और बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आप ये हमेशा एग्जाम में ध्यान रखिएगा। ओके, कि वहाँ पे करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट। ओके, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। आप सोचोगे कि सही बना के आया, बट वहाँ पे क्या होगा बाद में आपको पता चलेगा कि वो गलत हो गया। तो उससे अच्छा है कि आप देखते रहें कि वहाँ करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। हमेशा आपको एडवाइस यही दूंगी मैं कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो उसी टाइम आपको ये देख लेना है कि वहाँ करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ चांसलर इन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ओके, चांसलर का पोजीशन कौन होल्ड किया है? सो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? नो। Governor of the state? Yes. Option number B is the correct one. So thank you so much guys. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.